हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग आरएसएम एसएसपी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2021 के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो ऑल टोटल बहुत सारे वैकेंसीज निकला है, दैट इज अराउंड 273 वैकेंसीज। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है बाय द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड फॉर सर्टेन वैकेंसीज। एंड ये जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। फ्रॉम द 2nd of December it has started and if you are interested in it then you can fill it up right now. मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का नाम भी बता दूंगी वीडियो के एंड में, तो आप वहां पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। तो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस जॉब is on the 31st of December 2021. So we request every candidate to apply before the last date of online applications. Now, before applying for the job, we request every interested candidate to check the complete details of the eligibility criteria and different other requirements which are required for the post vacancies. If you want to apply for the post of motor vehicle sub-inspector, then there are 197 vacancies and your monthly pay would be around 9,300 to 34,800 and your job location would be in Rajasthan. If you want to apply for the post of assistant public relation officer, that is APRO, you are having 76 vacancies and your monthly pay details are not yet out in the notification PDF, but your job location would be in Rajasthan. So total number of vacancies is coming to 273. If you want to apply for the post of motor vehicle sub-inspector, that is MVSI, then you should be passing your class 10 with diploma in mechanical engineering or automobile engineering and your required experience is 1 year. Now for applying in the assistant public relation officer post, that is APRO, you should be having a graduation degree with required experience of 3 years. Now the candidate will be eligible for the job only if his or her age is as same as required by the Rajasthan Staff Selection Board rules and requirements for the posts required. If you want to apply for the post of motor vehicle sub-inspector, that is MVSI, then your minimum age should be 18 years and your maximum age should be 40 years. If you want to apply for the post of assistant public relation officer, that is APRO, your minimum age should be 18 years and your maximum age should be 40 years. Now the application fees for this job include 450 rupees to be paid by the general and the OBC category candidates and 250 rupees to be paid by the SC/ST category candidates. The selection process of the candidates will be based on the written examination, and if other tests are required as per the post's criteria, then you have to sit for the examination also. Now the application for this job can be filled from the official website, that is rsmssb.rajasthan.gov.in. ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। The last day to apply online for this job is on 31st of December 2021. If you want to apply for this job and if you want to prepare for such kind of examinations, then you need the guidance of a better mentor and a better coach. और हम सर्विसेज क्लासेस में वही मेंटर वही कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिविजन क्लासेस, देन क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, mock test facilities. So if you want to enroll in our classes, you can check the description box below. वहाँ पे हमारा contact numbers दिया गया है, आप contact कीजिए, WhatsApp कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। हमारे जो सॉल्व स्टडी मटेरियल्स है वो आपको Amazon, Flipkart में मिल जाएगा। सो अगर आपको वहाँ से खरीदना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूशन से भी खरीदना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्लासेस। और हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स को भी हम सॉल्व करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्लासेस एंड ऑल्सो अबाउट दिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन. We are going to meet once again in our next classes with some other discussion on the entrance examinations.